Welcome to Sri Raj IAS. Today's current affairs, and it is today 2nd May. So we are going to give you the important topics which is very relevant for UPSC and other state exams, right? It is today 2nd May. So the first topic is agricultural engineering, making Indian farming future ready, right? For the future, we are going to prepare our crops and लैंड से लेकर के आपके खाने की थाली तक की तैयारी हो रही है, राइट? सो द टॉपिक इज व्हाट इज एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग. So in this whole topics, in this today's current affairs, we'll discuss about the topics, its approach, its objective, and how it is relevant to PT as well as mains, right? So the first topic is agricultural engineering. Agricultural engineering refers to the application of scientific principles. Scientific principle engineering techniques and technological innovations. So agricultural engineering basically depends on the whole things innovations in agriculture. So in order to improve, so what is the objective of agricultural engineering? Number one is productivity, number two is efficiency, and number three is sustainability. So तीन ऑब्जेक्टिव है. एक पहला जो है प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है एंड सस्टेनेबिलिटी. It covers the entire agricultural value chain from land preparation, irrigation, cultivation, harvesting, storage, processing, and value addition, thereby ensuring a resilient and efficient food system. यानी कि लैंड से लेकर के फ्रॉम लैंड टू योर टेबल, डाइनिंग टेबल, और ओके, लैंड टू योर डाइनिंग टेबल. This is the main objective of agricultural engineering. What are the key data and statistics? What are the important features of agricultural engineering? So post harvest losses in India range between 5% to 15.88%, depending on the crop, as estimated by Central Institute of Post Harvest Engineering and Technology. But engineering interventions such as cold chains can reduce wastage by up to 75%. एक्चुअली भारत में जो क्रॉप होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि क्रॉप तो होता ही है, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इन इंडिया इज स्टोरेज. उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, क्रॉप्स कस्टमर तक पहुंच नहीं पाता है, मार्केट में पहुंच नहीं पाता है, और वो चीज़ बर्बाद हो जाती है, नहीं, ये वेस्ट हो जाती है, एंड दैट इज वेस्टेज अप टू 75%. प्रिसीजन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी सच एज वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी VRT and data driven pest management improve fertilizer use efficiency by about 12 to 15% and reduce pesticide use by 20%. The biggest problem in Indian crops is मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पेस्टिसाइड. अब वो जब आपके थाली तक पहुंचता है तो कस्टमर यानी कि ह्यूमन बीइंग जो भारत के सिटीजन हैं उनको बहुत नुकसान. तो उसको भी टारगेट है कि थ्रू एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग हाउ टू स्टॉप पेस्टिसाइड, यानी कि पेस्टिसाइड का कम से कम हम लोग प्रयोग करें. As highlighted by Indian Council of Agricultural Research and Economic Survey 2024 to 25, micro irrigation system under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana achieve water efficiency. The biggest challenge in Indian agriculture is how to utilize maximum utilization of water. So उस पर भी हम लोग कर रहे हैं काम. वो एफिशिएंसी बाय 85 to 90% compared to 30 to 50% in conventional irrigation and can reduce electricity consumption by about 30%. What is basically conventional irrigation? तो उसमें क्या हुआ, नहर से सिंचाई कर दिया, नदी से सिंचाई कर दिया. अब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू इरिगेशन में काम कर रहे हैं.
कम से कम पानी का उपयोग हो, पानी वेस्ट मत हो, राइट। फार्म farm mechanization in India is about 47%. Studies by Niti Aayog indicate that mechanization can increase productivity by 12 to 15% and reduce cultivation cost about 20% and cut labor requirements during sowing by up to 60 to 70%। यानी कि जब हम लेबर लगाएं या जिनके पास लेबर लगाने की कैपेसिटी नहीं है, जो फार्मर्स हैं, तो उसमें भी कटौती किया जाए थ्रू अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। रोल ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इन मॉडर्न फार्मिंग, व्हाट इज द रोल and how a farmer, a common farmer, can utilize agricultural engineering. See, the role of agricultural engineering in modern farming. Agricultural engineering ensure precision in farm operation through advanced machinery such as laser land levelers, seed drills, which improve input efficiency and crop yield. So we are basically bringing different types of machines also through many countries, and the farmers, we are also, government of India is giving training to the farmers how to sow, how to basically cut the crops, harvest, and all these things. इंजीनियरिंग इंटरवेंशन सपोर्ट सॉइल कंजर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सॉइल कंजर्वेशन पे काम कैसे करना है ताकि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बरकरार रहे, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रू टेरेसिंग एंड बंडिंग, प्रिवेंटिंग इरोजन एंड मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी। जो मैंने बताया आपको कि द बिगेस्ट चैलेंज इज सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन लंबे समय तक कैसे रखा जाए। पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग improves storage, grading, transportation, reducing losses and enhancing farmers' income. डिजिटल टेक्नोलॉजी सच एज ड्रोन्स, आपने सुना होगा कि अब ड्रोन से भी सिंचाई हो रही है, राइट। क्रॉप्स की देखभाल हो रही है। ड्रोन्स, सेंसर, सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग इनेबल रियल टाइम डिसीजन मेकिंग एंड प्रिसीजन फार्मिंग। सो आपने एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, सो थ्रू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी द टारगेट क्या है कि लैंड की जो फर्टिलिटी वो मेंटेन रहे, क्रॉप्स अच्छे हों। थर्ड इज कम से कम पेस्टिसाइड का यूज हो और कस्टमर यानी कि लोगों के थाली में कम से कम नुकसान वाली चीजें जाए। See, agricultural modernization opportunities. Agricultural engineering promotes integrated value chain by linking productions, processing, and marketing system. That very initially I said you what is the objective. What is the objective? Thereby improving efficiency and reducing wastage. एफिशिएंट करना है और जो वेस्ट हो रहा है उसको बचाना है। आपने सुना होगा कि भारत में बहुत साल पहले की बात है, 2014 के पहले बहुत सारे अनाज बर्बाद हो जाते थे, मतलब बाहर पड़े रह जाते थे और बर्बाद हो जाते थे। सो द बिगेस्ट चैलेंज इज हाउ टू रिड्यूस दिस थिंग्स, and we are working, the government of India is working in a proper way. It enhances economic viability by enabling farmers to produce high quality and standardized crops suitable for export markets. It strengthens climate resilience through technologies like polyhouses and climate controlled agriculture. It supports resources recycling through innovation such as biomass utilization, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर भी काफ़ी काम कर रही है। ओके, रेन हार्वेस्टिंग एंड वेस्ट टू एनर्जी सिस्टम, वेस्ट टू एनर्जी सिस्टम।
Challenges associated with agricultural engineering. What are the challenges? High initial cost of advanced technologies limit adoption among small and marginal farmers. The biggest problem in India is there are so many peoples, there are so many farmers, they are economically downtrodden. तो वो इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर, भाई हर आदमी तो ड्रोन खरीद नहीं पाएगा, अच्छे सिस्टम ला नहीं पाएगा, ड्रिलिंग सिस्टम ला नहीं पाएगा, देन हाउ टू यूटिलाइज द बिगेस्ट चैलेंजेस. Fragmented land holdings reducing efficiency of large scale mechanization. There exists a knowledge gap between technological innovations and farmer level adoption. Infrastructure deficiency such as unreliable electricity, because still today in many parts of India there is a lack of electricity. अगर है तो 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे के लिए अभी गांव तक उतनी नहीं एफिशिएंट पहुंच पाई है. एंड वीक लॉजिस्टिक्स हिंडर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन. द बिगेस्ट चैलेंज एक हमारा देश में ये भी है कि द बिगेस्ट चैलेंज इज लॉजिस्टिक. क्रॉप तो हो जा रहा है बट हाउ इट विल रीच टू द मार्केट. Way forward. Promotion of solar powered machinery, AI based tools. So we are working on this solar powered and many farmers are adopting this system. Robotics in agriculture should be encouraged. Expansion of custom hiring centers can make advanced machinery accessible to small farmers. Agricultural education should integrated engineering with प्रैक्टिकल फील्ड ट्रेनिंग. उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे लोग को अपॉइंट भी किया है कि हाउ टू ट्रेन एग्रीकल्चर. एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में बहुत सारी चीज़ों को समझाते भी हैं और फार्मर्स को बताते भी हैं कि कैसे आपको काम करना है और कैसे किस विभाग से किस डिपार्टमेंट से आपको अटैच होकर के ट्रेनिंग भी लेनी है. तो अगर किसान द फार्मर्स इफ लिसनिंग हिज मन की बात प्रोग्राम एवरी वीकली, so they are going to learn a lot. Okay. Targeted subsidies and financial support should be provided to smallholders. Investment in post-harvest infrastructure such as cold chains and processing units must be increased. So what is the conclusion? Agricultural engineering is a key driver in a transforming Indian agriculture into a modern, efficient and sustainable system. थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम लोगों ने प्रोसेस से चालू किया है. इट विल टेक अ टाइम बट डेफिनेटली वन डे इंडियन फार्मर्स विल बी well known from agricultural engineering. By improving productivity, reducing losses, enhancing resilience, it plays a crucial role in ensuring food security and increasing farmers' income. सो देखो दो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे भी आ गया. एक तो फूड की सिक्योर करना भी है प्लस सेकेंड इज फार्मर्स की इनकम भी बढ़ानी है. फार्मर्स की इनकम भी बढ़ानी है. I've said you will discuss also the what are the questions can be asked from this section in PT as well as मेंस. और बच्चों इससे रिलेटेड जो प्रिंट आउट है आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो. वेबसाइट पे डाउनलोड होता है. You can take it from there. So what are the prelims question? With the reference to agricultural engineering in India, consider the following statements. Number one, micro irrigation system can achieve. These are the statement based question and you well known this thing कि अब तो one liner question पूछे नहीं जाते हैं. Okay, so statement based. Micro irrigation system can achieve water use efficiency more than 80%. Farm mechanization has no impact on reducing labor requirements. Cold chain infrastructure helps reduce post-harvest losses. Which of the statement given above is correct? Above is correct. One and 3. A is 1 and 3.
2 and 3, 1 and 1, 2, 3. इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है? विच इज द करेक्ट वन? सो द करेक्ट वन इज ए, 1 and 3. 1 and 3. राइट. मेंस में क्वेश्चन क्या बनते हैं? एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इज ए क्रूशियल फॉर एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस इन इंडियन एग्रीकल्चर. जो मैंने बताया ना कि 3 ऑब्जेक्टिव है, इस पे पूछ देगा, कमेंट करिए आप. Discuss the role of agricultural engineering and transforming agricultural sector and examining the challenges in its widespread adoption. तो देखो क्वेश्चन तो आप बनाना पड़ेगा. क्वेश्चन आ गया, अब इसको आप अपनी लैंग्वेज में एटलीस्ट 250 वर्ड्स जरूर प्रैक्टिस करें. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप पर डे जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे द्वारा, हम लोग के द्वारा भेजे जाते हैं, उनको एक अलग से नोटबुक बना करके उनका आंसर लिखते हो, तो it has lot of benefits. Now another is ecocide. देखिए, हमने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की बात किया, अब उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता टॉपिक है, दैट इज इकोसाइड. ओके, नाम से ही क्लियर है, इकोसाइड है तो इन्वायरमेंट को, एक होता है सुसाइड होता है, कोई इकोसाइड होता है, राइट. तो हम लोग कैसे इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं, द टॉपिक इज रिलेटेड टू दैट वन, हाउ वी आर डैमेजिंग द होल प्लेनेट. Ecocide refers to the most extreme forms environmental destruction. आ गया ना वर्ड? Environmental destruction caused by human actions, where unlawful reckless activities are carried out with the knowledge that they are likely to cause severe, widespread or long term damage to the environment. यानी कि पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देना. जो प्रकृति ने बनाया है उसको पूरा, इकोसाइड का मतलब होता है कि पूरे सिस्टम को बर्बाद करना. वो प्रकृति नहीं कर रही है, कर कौन रहा है? ह्यूमन बीइंग. चाहे कोई लड़ाई लड़ रहा है, मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वेपन से डिस्ट्रक्शन हो रहा है. हिस्ट्री अगर आप पढ़ो, when we are reading history in Paleolithic age, Mesolithic and Neolithic age, the human beings are making the weapons to safeguard themselves from the animals. अब हम लोग वेपन्स बना रहे हैं किसके लिए? आदमी को मारने के लिए. And we are telling that we are civilized. Okay, we are damaging the whole environment. That is the term, new term came, ecocide. It represents a shift from a human-centered, anthropocentric approach to an environment, centered, ecocentric, understanding harm and where nature itself is treated as a victim. पहले हम लोग पेड़ लगाते थे, पेड़ कोई लगाता नहीं है, पेड़ लग जाता है तो गवर्नमेंट उसकी काउंटिंग करती है. And many places they're damaging to the whole areas. Key data and historical background. Ecocide was first coined in 1970 by author W. Galston in the context of environmental destruction caused by Agent Orange during the Vietnam War. वियतनाम वॉर आपने सुना भी होगा. ईगो की लड़ाई थी दो सुपर पावर के बीच में, राइट. Vietnam became the first country to codify ecocide its domestic legal framework in 1990, reflecting its experience of wartime ecological devastation. और अभी भी चल रहा है. अगर आप देखो, चाहे रशिया यूक्रेन वार हो गया, चाहे यूएस इजराइल और लेबनान या ईरान का लड़ाई हो गया, तो पूरा इन्वायरमेंट बर्बाद हो रहा है, पूरा बर्बाद हो रहा है. Several countries such as Russia, Ukraine, France, Belgium, Chile have incorporated provision related to ecocide or severe environmental crimes in their domestic laws. मतलब इन लोगों ने ये लॉ बनाया, they have made a law that if you are damaging environment, deforestation, so it is a crime. इसे crime का नाम दिया गया. In 2021, an expert panel convened by Stop Ecocide International proposed a legal definition of ecocide to facilitate its inclusion in the Roman statutes as a fifth international crime
alongside genocide, crimes against humanity, war crimes एंड एग्रेशन। तो देखिए वो तो आज भी चल रहा है। अब एक नया टर्म आ गया, इकोसाइड। तो आप लोग तो कहीं पेड़ वेड़ तो नहीं काट रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इकोसाइड वर्सेस एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एनवायरमेंट लॉ। Existing international law largely follows an anthropocentric approach focusing on human suffering rather than environmental destruction itself. ह्यूमन सफ़र कर रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट एनवायरनमेंट सफ़र कर रहा है किसी को लेना देना नहीं है। ओके, many I've said, the many countries made a law, Russia बनाया, Ukraine and many other countries, they made a law that we will not damage, but once the war start, conflict start, aggression start, they do not care about the environment. In contrast, ecocide adopts an ecocentric approach, recognizing environment as an independent entity deserving legal protection. Current laws treat environmental damage mainly as by productions conflict as civil liability. मीन्स इसे बोला जाता है सिविल लाइबिलिटी। ये आपका दायित्व है कि एनवायरनमेंट को बचाइए। ये आपका दायित्व है कि एनवायरनमेंट को बचाइए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका दायित्व है कि एक पेड़ लगाइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री जी भी हमारे बोलते हैं कि जिस दिन आपका जन्मदिन हो, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। ओके, whereas ecocide aims to establish a criminal liability for the large scale environmental harm. International Criminal Code currently addresses environmental damage only under war crimes and only when such damage is excessive in relating to military advantage. Ecocide seeks to go beyond these limitations by covering both wartime and peacetime environmental destruction. What are the legal limitations of current legal framework? बहुत सारे लोग को तो पता ही नहीं है इकोसाइड क्या होता है। ओके, सो आप लोग देख रहे हो तो लोगों को भी समझाना है कि व्हाट इज इकोसाइड। ओके, the Rome Statute limits the prosecution of the environmental damage wartime scenarios, requires a proof that such damage is disproportionate to military objectives. Jurisdictional limitation exists because of ICC can act only against member states through UN Security Council, restricting its effectiveness in many global conflicts. So इकोलॉजी जो डैमेज होता है वो इसी वजह से होता है। एग्रेशन है, वॉर टाइम है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज है, तभी डैमेज होता है। There is no universal binding international law that criminalizes the ecocide, making enforcement weak and consistent. किसी ने एक पेड़ काट दिया, जेल नहीं जाएगा वो। जेल कहाँ से जाएगा वो? हाँ, इफ द गवर्नमेंट विल टेक एन एक्ट, उसको अगर पनिश किया जाए कि वो तुमने क्राइम किया है। अभी इतना ज़्यादा ये पावरफुल नहीं हो पाया है। Existing laws often requires proof that direct human harm, ignoring ecological damage that may not immediately affect human population. High evidentiary standards make it difficult to prove intent or knowledge in the environmental destruction cases. Ecocide in the context of the modern warfare. Modern conflicts increasing involve large scale ecological destruction. वो तो आज भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उससे सब कुछ डैमेज हो रहा है। ओके, इंक्लूडिंग डिफ्रॉस्टेशन, नंबर 1,
नंबर 2, वाटर कंटामिनेशन सब जगह हो गया है। और वाटर कंटामिनेशन तो इतना ज़्यादा हो गया है कि मतलब इवन अ फ्रेश वाटर नीड अ फ्रेश वाटर। ओके, डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन फ्रॉम वेपन्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। और ये सब हम लोग जानबूझ के कर रहे हैं, हमको पता है ये हो रहा है, ये पता है हम हो रहा है। Such environment degradation has long-term consequences of food security, public health, climate system, livelihoods, extending far beyond the durations of the conflict. Recent allegation by countries like Lebanon and Iran, जो मैंने अभी आपको बताया, Lebanon and Iran highlight the growing relevance of ecocide in contemporary geopolitical conflicts. Geopolitical conflicts. What are the enforcement challenges? Amending Roman statute to include ecocide requires a two-thirds majority of member states, making legal adoption difficult. जो member state हैं वही इसको adopt नहीं कर पाए अभी तक. There is currently no precedent of the international prosecution specifically for environment destructions in war. Political resistance from powerful nations limits the development of the binding international legal norms. Even where universal jurisdiction exists in the some regions, its global applications remains limited and inconsistent. यानी कि there are many countries they are adopting but they are not applying in their country. Either most of the people do not know about it, बहुत सारे देश के लोग को ही नहीं पता है ये बात. So what is the way forward? Way forward, regional frameworks such as European Conventions on Environmental Protection 2025 can serve as model for the global legal development. Countries should be encouraged to adopt domestic laws criminalizing ecocide to build international momentum. भाई मैं कहता हूँ कि हर जगह हर चौराहे पे एक बोर्ड लगा दिया जाए कि पेड़ को काटना नहीं है, पेड़ की सेवा करनी है. जो भी पेड़ काटेगा या किसी भी इन्वायरमेंट को नुकसान कंटामिनेट करेगा, वाटर को करे, चाहे रेन हार्वेस्टिंग नहीं करता है, तो उसकी एक टीम बनाई जाए. जिस तरह ईडी रेड मारती है उसी तरह हम मतलब इसके ऊपर भी काम हो तो डेफिनेटली इट विल वर्क. द पीपल विल अवेयर. And once the people will aware, everything is going to be happen. Most of the people are not aware. There is lack of awareness. Lack of awareness. Diplomatic efforts must continue to amend the Roman Statute to formally recognizing ecocide as an international crime. As an international crime. Clear legal definitions, widespread, severe and long-term damage are necessary to ensure enforceability. International jurisprudence should involve the recognize the intrinsic rights of the nature, moving beyond purely human-centered legal frameworks. भाई इकोसाइड जो है ये ह्यूमन बीइंग से ही रिलेटेड है और बचाना किसको है? ह्यूमन बीइंग को. बट आप तो इसको डैमेज करते जा रहे हो. आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि द अमेजोन जंगल which is very important for the oxygen, which releases maximum oxygen, it is going to be deforested. The concept of ecocide represents a transformative shift in the international environmental governance by recognizing environmental destruction as serious crime in itself. While current legal system remain limited in addressing large-scale ecological harm, growing global awareness and domestic legal developments provide momentum of its eventual recognition. Establishing ecocide as an international crime would act as a critical legal safeguard against environmental destructions in both war and peace. यानी कि अगर इसको हम लोग नियम के तौर पर इंटरनेशनल लॉ बनाया जाए
and effectively we will advertise, or we are going to the public is going to be well known from this thing. So definitely it can stop. Now what are the questions can be asked in the prelims and mains? Prelims: with reference to the concept of ecocide, consider the following statements. Number one, it refers to severe environmental destructions recognized as an international crime under the Rome Statute. Second, it adopts an ecocentric approach by recognizing the environment as victim. Third, International Criminal Court currently prosecute ecocide as a separate crime. So, which of the statement are correct? So, the correct one is second. Only two. यानी कि ये जो है, it adopts an ecocentric approach by recognizing the environment as a victim. What is the main question? मेंस पे किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है? मैंने आपको बताया कि मेंस का जो क्वेश्चन उसे उसी दिन उसको लिख करके प्रैक्टिस कर लो आप. The recognition of ecocide as an international crime has been proposed as a major reform in a global environmental governance. Critically examine the need for such recognition and the challenges associated with its implementation. How many words? 250 words. What is the next topic? Kavu nursery. Kavu nursery. Basically, this is a term has been developed in Kerala. नाम से अभी इसको I'll explain it. It has been developed in Kerala, a type of nursery which is highly motivated to all the farmers and the one who is associated with it. Kavu, what is the news? Kavu nurseries are the specialized ecological nurseries established to conserve. देखिए वहाँ पे हम लोग इकोसाइड पढ़े, यहाँ पे हम काबू पढ़ने जा रहे हैं. टॉपिक क्या है? टू कंजर्व, propagate native epidemic and threatened plant species associated with the sacred groves, kavus of Kerala. These nurseries act as a biodiversity regeneration centers, supplying ecologically appropriate plant species for the restorations of degraded sacred groups. तो उनको बचाना है भाई. जो पौधे गायब हो रहे हैं, वो पौधे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, तो जो गुप्त गायब होते जा रहे हैं उनको बचाना है. रीजनरेशन सेंटर्स सप्लाइंग इकोलॉजिकल अप्रोप्रिएट प्लांट स्पीसीज. द प्लांट स्पीसीज विच इज गोइंग टू बी लॉस, डिसअपियर, उनको खोजना है, उनको बचाना है. उसके लिए काबू बनाया गया है. And the initiative was taken, launched by Kerala State Biodiversity Board as a part of community-led conservation effort. So केरल गवर्नमेंट ने इसको बनाया, एक बोर्ड बनाया कि भाई इस पे काम किया जाए. जो स्पीसीज लुप्त हो रही हैं, गायब हो रही हैं, उसके ऊपर काम किया जाए. What are the key features? Kavu nurseries focus on propagations of more than 100 indigenous plant species. So ऑब्जेक्टिव मैंने बताया आप लोग को. जो स्पीसीज गायब हो रही हैं या लुप्त हो रही हैं उनको बचाने के लिए केरल गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाया और इसको चालू किया गया है. That are traditionally found as sacred groups that are often rare or threatened. They are designed to supply around 3,000 saplings in the pilot phase for the replantations and ecological restorations of the degraded kavus. These nurseries promote the replacements of invasive alien species with a native vegetation, thereby restoring ecological balance. The initiative is implemented through a local institutions such as Biodiversity Management Committee,
constituted under a Biological Diversity Act 2002, ensuring community participation in conservation. तो काबूज का क्या है, एक ही गोल है, कंजर्वेशन, those species which is going to be lost, उनको बचाना. The propagation aligns with the India's commitment to under Convention on Biological Diversity for in situ conservation of ecosystem. ecosystem. Ecological and cultural significance. What is the ecological and cultural significance? Kavus are traditional sacred groups that function as micro ecosystem, preserving rich biodiversity, including medicinal plants. भाई केरल अगर आप जा रहे हो तो वहाँ medicinal plant मिलेगा ही. The lots of medicinal plants are there. Endemic flora, rare species. Kavus nurseries help revive these ecosystems by restoring their original plant diversity. They contribute ecosystem service such as soil conservation, groundwater recharge, carbon sequestration, microclimate regulation, thereby enhancing environmental sustainability. The initiative strengthens the link between traditional ecological knowledge and modern conservation strategy by integrating cultural beliefs with the scientific restoration practices. तो देखो पहला जो हम लोग टॉपिक किए थे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग किए, दूसरा किए इकोसाइड किए, एंड थर्ड ये है काऊ. तो देखो सभी एग्रीकल्चर से ही या उससे इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है. रोल इन कंजर्वेशन एंड गवर्नेंस. Kavu nurseries support decentralized biodiversity governance by empowering local communities, institutions in conservation planning and implementation. They promote in situ conservation by restoring natural habitats rather than relying solely on ex situ approaches. The initiative complements national biodiversity conservation strategies and supports sustainable development goal SDG sustainable development goals, particularly those related to life on the land. What are the challenges? इसको सस्टेन कराने के लिए हमारे पास क्या क्या चैलेंज है, हम लोग के लिए क्या चैलेंज होगा, गवर्नमेंट ऑफ केरल को, स्टेट गवर्नमेंट को क्या क्या. Limited awareness, declining cultural attachment to sacred groups, reduce community participation in conservation efforts, urbanization. The biggest challenge is urbanization. आप देखो तीनों जगह इको साइड में भी आपको ही मिलेगा. Urbanization and land use change continue to threaten the existence of the Kavus. Invasive species and ecological degradations pose long-term restoration challenges. Institutional capacity constraints at the local level may affect effective implementation and monitoring. Effective implementation and monitoring. Way forward. Scaling up Kavu nursery across Kerala and other regions with the sacred groups can strengthen biodiversity conservation efforts. Integrating these initiatives with the ecotourism and educational programs can enhance awareness and community engagement. Strengthening institutional capacity and providing financial support to the local bodies
will improve long-term sustainability. Documentation of traditional ecological knowledge should be prioritized to support scientific restoration practices. So, what is the conclusion? Kavu nurseries represent a unique convergence of traditional knowledge and modern ecological restoration. By revitalizing sacred groups, they not only conserve biodiversity. तो काऊ का ऑब्जेक्टिव क्या है? To conserve biodiversity, but also reinforce community-led environmental stewardship. This model offers a sustainable pathway for decentralized and cultural rooted conservation in India. So what type of question can be asked in the prelims? With reference to Kavu nurseries, consider the following statement. 1. They are designed to promote the cultivation of exotic plants species for commercial use. Second, they are linked to the conservation of the sacred groups and native biodiversity. Third, they are implemented with the participation of biodiversity management committees. Which of the statement above is correct? 2 and 3, 1 and 2, 1 and 3, and 1, 2, 3. So A statement is correct, others are wrong. 2 and 3. ये गलत है. What is the main questions can be asked in the mains examination? Sacred groups represent a unique model of community-based conservation in India. Discuss the role of initiatives such as Kavu nurseries in strengthening biodiversity, conservation and decentralized environmental governance. यानी पहली बात काबू का ऑब्जेक्टिव क्या है? To conserve the endangered species, started by Kerala government. Now, this topic is related to Indian history, modern India. कामागाटा मारू इंसिडेंट. कामागाटा मारू इंसिडेंट, इसको मैं आप लोग को बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. कामागाटा मारू, basically it is a Japanese ship name, and a man one who was settled in Singapore. His name is Baba Gurdeep Singh. He chartered a Japanese ship. Okay, Japanese ship. His name is Baba Gurdeep Singh. He chartered a Japanese ship. And that one there is a 376 passengers were there, including Hindu and Muslim. Okay, from Punjab. They all are from Punjab, and they basically boarded to Vancouver. Vancouver, where is it? Canada. So the ship anchored at Vancouver, but the Canadian authorities, which was run by the British government, उन्होंने उसको मना कर दिया. You are not allowed to anchor here. And finally, the ship anchored at Bajbaj. Bajbaj is a port in West Bengal. Okay, and the ship arrived at Vancouver. सोचो आप, सिंगापुर से चालू किया, कनाडा गए, फिर कनाडा से उन्होंने मना कर दिया और ये बजबज पहुंचा. And the British government ensuing, British government said to these people 376, you are not allowed to stay in West Bengal. You have to go to Punjab. In that ensuing protest, the people protested against it, where some people were died. Okay, that is basically वैंकूवर इवेंट. दिस इज ए कामागाटा मारू इंसिडेंट. अब आप पूछोगे सर वहाँ पे वैंकूवर में मना क्यों कर दिया? Actually, most of the people still today from Punjab, they go to Canada for the seeking of the jobs. और उस समय भी वो लोग जाते थे. लेकिन that time, apart from going to Canada, they were also running some of the revolutionary movement.
तो उनको ऐसा लगा कि भाई ये ऐसा तो नहीं, गदर पार्टी का नाम सुना होगा आपने। ओके, तो ये सब बाहरी, ये पार्टियां तो बाहर ही बनी थी, तो अंग्रेजों को लगा कि भाई ये तो वहाँ पे जॉब के लिए नहीं जा रहे हैं, जॉब के अलावा भी और एक्टिविटी कर रहे हैं, दे आर इन्वॉल्विंग देमसेल्फ इन ए रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो उन्होंने मना कर दिया, फिर वो बजपत पहुंचे एंड द पीपल प्रोटेस्टेड वेयर some people were some people were died. Around 22 people, 22 passengers ship leave on, yes, 23 permitting on, only with 22 passengers to remain in Canada. Returning to, they returned to Calcutta, that is a Bajbaj port, where the 22 peoples were died. 20 peoples were died. And this is known as Kamagata Maru incident. So the biggest is racial discrimination. Second is they have suspensed that Indians are running some kind of revolutionary movement either in India that time period or some other days. Because revolutionary movement धीरे धीरे अब जोर पकड़ता जा रहा था. ये दौर 1914 का है. You must know that home rule movement भी अब चालू होने वाला है. Right? And after Swadeshi movement, the Indian become very aggressive. And when Minto Morley reform came in 1909, the peoples become so aggressive against the British policies. Against the British, Muslim League का formation हो चुका है, 1909 Minto Morley reform भी आ चुका है, the peoples are become very aggressive. Very aggressive. So this is called the Kamagata Maru incident, जिसको मैंने आपको बताया. Explanation already has been given in this one. What are the questions can be asked in the prelims? With reference to Kamagata Maru incident, consider the following statement. It involves Indian passengers who were denied entry into Canada due to the discriminatory immigration laws. The incident was directly linked with the Gadar movement. Gadar party was founded by Lala Hardayal, भाई परमानंद एंड बरकतुल्ला. ये तीन लोग का नाम याद रखिएगा आप लोग. लाला हरदयाल, भाई परमानंद एंड बरकतुल्ला. Okay, so the passengers were allowed to freely disembark upon their return to India. So which of the statement given or above is correct? So only one is correct. It involved the Indian passengers who were denied. It has no link with the Gadar party. It has no link with the Gadar. तो ये दो हमारे स्टेटमेंट गलत हैं. मेंस पे क्वेश्चन भी बन सकता है इसके ऊपर. The Kamagata Maru incident reflects both racial discriminations in the colonial policies and the rise of revolutionary nationalism among the Indian diaspora. Discuss its causes, course and significance in the context of India's freedom struggle. Okay. And the last topic. Indian Post Payments Bank IPB launches SHG saving accounts. What is Indian Post Payments? Indian Post Payments Bank. India Post Payments Bank is a 100% government of India owned payments bank operating under Department of Post, Ministry of Communication. It was launched on 1st September 2018 with the objective of, objective क्या है ये इंपॉर्टेंट होता है. किसी भी प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव जानना बहुत जरूरी है. कब ये ऑपरेट हुआ था, कब ये चालू हुआ था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. 1st September 2018 with the objective of promoting financial inclusion by providing accessible and affordable banking services to the unbanked and underbanked population, especially in the rural area. तो टारगेट क्या है? रूरल एरिया. लोगों को अवेयर कराओ, जिनको लोन नहीं मिल रहा है उनको लोन दो, कोई दिक्कत है तो उसको बताओ, एक खाता खुलवाओ, ये सारी चीज़ें उनको करना है. IPB is built on the Indian stock framework for enabling paperless, cashless
and presence-less banking through a biometric authentications and digital platforms. Okay, what is the key features? IP IPPB leverages a vast postal network around 1.65 lakh post offices, of which 1.4 lakhs are located in the rural areas. So it is directly connected with the post offices. It utilizes approximately 3 lakh postal employees, including Gramin Dak Devak, De Sevak, Gramin Dak Sevak, to डिलीवर डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज. जैसे पोस्ट कार्ड आता है या आपका चिट्ठी आता है, तो इस तरह इनको डिलीवर करो भाई. It provides banking services through CBS integrated smartphones, biometric devices, enabling digital transactions even in the remote areas. IPB supports multilingual banking services in the multiple Indian languages to enhance accessibility. It plays a key role in advancing फाइनेंशियल इंक्लूजन अंडर इनिशिएटिव सच एज डिजिटल इंडिया. यानी कि डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये है. What is the SHG saving account? SG saving accounts is a specialized banking product introduced by IPB to cater specifically self help groups. इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होता है, वीमेन का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज इन डिफरेंट डिफरेंट एरिया सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, विच इज़ रन बाय वीमेन, particularly women led groups engaged in the rural livelihoods and microfinance activities. Microfinance activities means जिसको किसी को 10,000 रुपया लोन चाहिए, 20,000 चाहिए, तो बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको ये हेल्प करना. The objective of this initiative is to integrate SHG into the formal financial system and strengthen women's financial empowerment. It aligns with the programs like National Rural Livelihood Mission and initiatives supported by NABARD. तो ये ग्रामीण इलाके से रिलेटेड है, रन बाय डिफरेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बाय वीमेन. What are the key features? It is a zero balance account with a no requirement of maintaining a minimum average balance. Maximum permissible balance in the accounts is 2 lakh as per payments bank regulations. It provides quarterly interest payouts based on prevailing saving rates. It offers free cash deposits and withdrawals, ensuring cost effective banking for SGGs. Digital onboard is enabled through postal staff, ensuring last mile inclusion. It includes one free physical account statement per month and no hidden charges, such as account closure fees or QR code and issuance cost. Significance. What is the significance? Initiative strengthens financial inclusion by bringing women led. तो बेसिकली इस जो इनिशिएटिव है, इसमें वीमेन का सबसे बड़ा रोल है. उनको इंगेज भी करना है, बीजी भी करना है, और विदाउट वीमेन अ कंट्री कैन नॉट बी, आर कंट्री कैन नॉट बी विकसित भारत 2047 बाय द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. It enhances access to credit, savings and financial services for rural household. It promotes women empowerment and supports livelihood generations. It contributes to inclusive growth by integrating grassroots economic units into the formal economy. What is the conclusion? Launch of SGGs saving accounts by IPB represent a significant step towards deepening financial inclusion and empowering the rural women. मैंने बताया
एक तो फाइनेंस को अच्छा करना है, वीमेन को इंगेज करना है. By leveraging its existence and postal network and digital infrastructure, IPB is playing a crucial role in bridging the urban-rural financial divide. Prelims question. With reference to the India's Post Bank, consider the following statement. It is a wholly owned entity of the Government of India under the Department of Post. It can provide loans and issues credit cards like commercial banks. It operates using a vast postal network to deliver doorstep banking services. So, which of the statement is correct? So, only one is correct. 1 and 3 statement is correct. The second one is wrong. And the main question is discuss the role of payments of banks, particularly in India Post Payments Bank, in promoting फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया. तो भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन तो वीमेन का बहुत बड़ा रोल इसमें है. तो हाउ कैन इनिशिएटिव लाइक SGG's saving accounts strengthen rural economic empowerment? So the question can be asked in the mains examination like this way. So thank you very much. अब द दिस टॉपिक्स आप लोग इसको गो थ्रू भी हो सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं. मेंस का जो क्वेश्चन मैंने बताया उसे ज़रूर लिखना है डे टू डे. इट विल हेल्प यू अलॉट. सारे क्वेश्चन इसी से आ जाए, मतलब यू विल गेट अ लॉट ऑफ एडवांटेज इन द मेंस एज वेल एज इन PT. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.